A very good morning dear students. I welcome you in English grammar class. So today I am going to explain future perfect continuous tense. What is future perfect continuous tense? Let's see here. The future perfect continuous tense refer to a longer action at a particular time in the future. Future perfect continuous tense future में particular time में लॉन्गर एक्शन को रेफर करता है. ओके, एंड इट डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर एंड विल कंटिन्यू थ्रू अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो पहले शुरू हुई थी और फ्यूचर में एक लॉन्ग टाइम तक वो कंटिन्यू रहेगी. ओके, it means we use future perfect continuous tense for a particular time. Okay, now let's see the structure of future perfect continuous tense. First we will write subject plus will have been plus verb first form plus ing plus object plus since and for and plus time. Okay, subject it can be a singular and it can be plural. It means subject singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है. Singular subject like he, she, it, any name, and plural I, you, we, they. Okay, and then after we will write will have been. Main important thing is in future perfect continuous tense with singular subject and with plural subject. In all we will write will have been. Okay, because in old English we used to use with I and we write shall, but now we are not using shall have been. Nowadays we are not using shall. आजकल हम shall का यूज़ नहीं कर रहे हैं. पहले ओल्ड इंग्लिश में हम लोग I और we के साथ में shall का यूज़ करते थे. But here we will use with singular subject and with plural subject. इन सब के साथ में हम will have been का यूज़ करेंगे. ओके, then after we will write verb first form and ing. In all continuous tense we use verb first form and then we write ing because it's a rule. हम हमेशा जो ing है वो verb की first form में ही add करते हैं. For example, go is a first form and we will add ing, it will be going. And then sleep first form we will add ing, sleeping. Okay, then after we will write object. Okay, and then after we will write since and for, and then after we will write time. And now where we will use since and where we will use for. So since we use for point of time. since का यूज़ हम कब करते हैं? point of time. it means यदि हमें किसी का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो हम since का यूज़ करते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट it means since morning, सुबह से. since childhood it means एक स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता है. ठीक है, since 2 PM, since 4 PM, since आफ्टरनून. ओके, सो अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता है देन वी विल यूज सिंस. ओके, नाउ वेयर वी विल यूज फॉर. सो वी यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इट मीन्स वो काम कितनी देर में हुआ है. वी डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बट वी नो ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ड्यूरेशन यानी कितनी देर में वो काम हुआ है. फॉर एग्जाम्पल 4 5 years, 4 3 months, 4 2 weeks. Okay, 4 2 hours. Okay, so we use since for point of time and we use for duration of time. Okay, and then after we will write time. Okay, now let's see the examples for it. Okay, first example, he will have been going to coaching since morning. Okay, he is a singular. Okay, and that's why I have written will have been. And I told you with singular subject and with plural subject सबके साथ में ही, चाहे वो he, she, it, I, you, we, they, सबके साथ में हम will have been का ही यूज़ करेंगे. So he will have been going to coaching since morning. Okay, वह since morning it means सुबह से
कोचिंग जा रहा होगा, बिकॉज इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट मीन्स वो सुबह से कोचिंग जा रहा होगा. सेकेंड, टीना विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड. जो टीना है वो अपने बचपन से, चाइल्डहुड इट मीन्स इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हेयर सिंस. ओके, जो टीना है वो अपने बचपन से इंग्लिश सीख रही होगी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग. सो मॉर्निंग इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हेयर सिंस. ओके, सो मैं, इट मीन्स सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से डांस कर रही होंगी. ओके, नेक्स्ट, I will have been eating vegetables for 3 months. यहाँ पर 4 क्यों आया है? Because 3 months. 3 months कौन से 3 months? We don't know the starting point. We know only duration of time. कितनी देर में? 3 hours, 2 hours. That's why I have written here 4. 4 we will use for duration of time. Okay. So for 3 months. It means 3 महीने से मैं वेजिटेबल्स खा रही होंगी. ओके, नेक्स्ट इज शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. 2 hours इट मीन्स 2 hours इट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम. कौन से 2 घंटे से? वी डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट. जब स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता नहीं होगा देन वी विल यूज 4. ओके, 2 hours कौन से 2 घंटे से? ओके, दैट्स वाई आई हैव रिटन हेयर 4. शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से सो रही होगी. ओके, सो वेयर वी विल यूज सिंस एंड वेयर वी विल यूज 4. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एग्जाम्पल्स you have seen and you have understood where we will use since and where we will use for. Okay? Now let's see the structure of future perfect continuous tense. First, positive structure: subject plus will plus have plus been plus verb first form plus ing plus object plus since and for plus time. Okay, so sentence example is subject is he. Okay, then we will write will have been. Will have been. I have written here shall have been also. In old English we used to use shall have been with subject I and we, but in modern English we are not using shall have been with subject I and we. Okay, with singular subject he, she, it, any name, and with plural subject I, you, we, they, we are using will have been. Okay, then verb first form ing. Go is verb first form and then we will add ing. In all continuous tense we add ing with verb first form. Then it's object. Then since and for we will write here since because morning is a point of time. We write since for point of time. That's why I've written here since and then morning. So sentence example will be he will have been going to coaching since morning. Okay, next, second, negative structure: subject plus will plus not plus have plus been plus verb first form plus ing plus object plus since and for plus time. Okay, so let's see the sentence example. Subject he, then will not have been. Will and then not because it's a negative. Okay, then have, then been, then verb first form ing going to coaching object and then since, then morning. Okay, so sentence is he will not have been going to coaching since morning. Third, interrogative. First we will write helping verb will, then subject plus have plus been plus verb first form plus ing plus object plus since and for and plus time. Okay, sentence example: will
it's a helping verb, and in interrogative sentence, as I told you so many times, we have to write helping verb before subject. That's why I have written here helping verb will, then subject he, then have been, verb first form ing going, and object to coaching, and then since and for since, and then morning. So sentence example, will he have been going to coaching since morning, and end of the sentence put the question mark. Okay, and now next, interrogative negative structure is will plus subject plus not plus have plus been plus verb first form plus ing plus object plus since and for plus time. Okay, so sentence example, will, it's a interrogative negative, that's why we have to write will and not in this sentence. Okay, so first we will write helping verb will before subject will, then subject is he, then not, then have, then been, then verb first form ing going, then object to coaching, then since, and then morning, and end of the sentence interrogative sign. Okay, so sentence example, will he not have been going to coaching since morning, and end of the sentence put the question mark. Okay, so positive, negative and interrogative negative sentence are, first he will have been going to coaching since morning, वह सुबह से कोचिंग जा रहा होगा. सेकेंड नेगेटिव, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कोचिंग नहीं जा रहा होगा. इंटेरोगेटिव, विल ही हैव बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से कोचिंग जा रहा होगा. इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से कोचिंग नहीं जा रहा होगा. ओके, सो दीज आर सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.